Hello everyone, this is Pragya Pandey from RAO'S Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. Without wasting any time, let's see what is in the news. 24th September, that is observed as the World Alzheimer Day and the World Gratitude Day. When we talk about Alzheimer diseases, it is a neurological disorder that causes brain cells into degeneration and death. This leads to the loss of memory, problem with words in speaking or writing, poor judgment, change in mood and personality, confusion with time or place, etc. At the first stage, these symptoms are mild, but they become more severe as the time passes. Alzheimer is also the most common causes of dementia, जो कि usually हमारे जो older elderly people होते हैं वो dementia से suffer करते हैं. Where dementia is a group of brain disorder that can cause a loss of intellectual and social skills. Alzheimer caused by the buildup of protein known as tau tangle or plaque within the brain, and it is also known as the third type of diabetes. Tau is a protein that when it occurs in tangle formation in the brain of Alzheimer patient, it disrupts the ability of neurons to communicate with one another in the brain. अगर हम Alzheimer की बात करें तो it is an incurable disease और जो भी brain cells की death हो चुकी है उनको recover करना is highly impossible. मोस्टली जो विमेन्स होती हैं वो इससे ज्यादा प्रोन होती हैं कंपैरेटिव टू द मेल्स. Moving on to the next news, 24th September is also celebrated as International Peace Day. The United Nations General Assembly marks the day by promoting ideas of peace among nations and people by observing non-violence and ceasefire for 24 hours. The theme for this is Year End Racism and Build Peace. We have a good news. Gujarati film Cello Show has been nominated as India's official entry for Oscar in 2023. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने और बाकी सभी जैसे बोलते हैं अपने स्वामी की आवाज में बोलने वाला पिंजरे में बंद तोता, सीजीआई ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेस किया है कि अब इसकी विश्वसनीयता पर, इसकी क्रेडिटेबिलिटी पे डाउट्स होने लगे हैं. ये कितना सही है या नहीं, इस पर अब ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता. चलिए देख लेते हैं सीबीआई के बारे में. Central Bureau of Investigation, it is a statutory investigation body that formed under the Delhi Special Police Establishment Act 1946. It comes under the Department of Personnel, Ministry of Personnel and Pension and Public Grievance of the Government of India. In matter of the Prevention of Corruption Act 1988, it works under the supervision of Central Vigilance Commission. सीबीआई की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देख लेते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1941 में ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर भी बोलते हैं, एक विशेष पुलिस स्थापना दैट इज स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एसपीई बोला जाता है का गठन किया गया, ताकि युद्ध से संबंधित और खरीद मामलों में जितनी भी जो रिश्वतखोरी चल रही थी, जो ब्राइब चल रही थी, जो करप्शन के चार्जेस थे, उनको आसानी से देखा जा सके और उनकी जांच किया जा सके. लेकिन वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एजेंसी की नीड महसूस हुई, क्योंकि जो भी करप्शन या ब्राइबरी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के द्वारा की जा रही थी, उसकी जांच में ये बहुत अच्छा सहयोग दे सकता था. इसी के लिए दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया. The jurisdiction of SP was extended to all the union territories, and the act provided for its extension to the state with the consent of the state government. 1963 के दौरान SP को ऑथराइज किया गया to investigate so many offences under 91 different sections of Indian Penal Code and 16 other central acts beside offence under the Prevention of Corruption Act 1947. सीबीआई की जो स्थापना की सिफारिश है या जो रिकमेंडेशन है, उसको के संथानम कमेटी ने किया था 1962-64 के दौरान, और उसी के अंदर सीबीआई को एस्टैब्लिश किया गया बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन April 1st 1963. बाद में इट वाज ट्रांसफर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, और अब ये एक अटैच्ड ऑफिस के रूप में अपना स्टेटस एंजॉय करता है. In 1964, the Central Vigilance Commission was also set up by the government on the recommendation of same Santhanam Committee to advise and guide central government agencies in the field of vigilance.
अगर हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के jurisdiction को देखने की बात करें, तो initially the jurisdiction of CBI was extended only to the offence that were notified by the central government related to corruptions by central government servants. But बाद में जो PSU के employees थे, उनको भी CBI के purview में लेके आया गया. After the nationalization of bank in 1969, the public sector banks and their employees were also came within the ambit of the CBI. Since 1965, the CBI has also been entrusted with the investigation of economic offences and important convictional crimes such as murders, kidnapping, terrorist crimes, etc. on the selective basis. CBI can also take up suo motu investigation of offence only in the union territories. मतलब खुद संज्ञान में लेकर एक जांच को बिठा सकता है सीबीआई. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम इन अ स्टेट, लेकिन अगर स्टेट का परमिशन हो तभी. लेकिन व्हेन इट कम्स टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दे कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री जिसमें इन्हें स्टेट के कंसेंट की आवश्यकता नहीं होगी. So it's the quiz time, and the first question is, which committee recommended to establish the Central Bureau of Investigation? The second question is, which of the following statement is not correct about the Central Bureau of Investigation? And the third and the last one is, the Central Bureau of Investigation comes under which of the department? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. So you all know the drill. आपको सही आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, and stay tuned with us to know the correct answers. So this is it for today. Join our batches for UPSC MPPSC Civil Services Examination. Seats are very limited, so hurry up. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button. Also comment your valuable feedback. Please press the subscribe button to never miss any update. Follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.